Good evening, everyone. Welcome to today's special class. Good evening. Welcome to today's special class. आज रे क्लास रे हमें 40 बेस्ट MCQs को कवर करिवा. Good evening. Physiographic divisions of India. एथरे जेते भी एक्सपेक्टेड क्वेश्चन सही पारे. एंटायर इंडियन कॉर्नर रो को जगह रे पहाड़ पर्वत अछंती. ए सबू को दृष्टि नजर रखिया रे आमे जहाँ भी क्वेश्चंस आपण पई आनिछु. तो एंटायर इंडिया रो डायग्राम रे इंडिया रो जो जगह रे कौन कौन पहाड़ पर्वत अच्छी कोटी हाईएस्ट पिक कोटी लोएस्ट पिक कोटी इंटरकनेक्शन जंक्शन इंडिया रो मेजर फिजियोग्राफिक डिविजन्स कौन नॉर्थ ईस्ट पटे केमती एक्सटेंशन हेची को पहाड़ भितर को नदी फ्लो होची खादर भाबर कौन ए सब डिटेल्स माने इनडायरेक्टली ये 40 एमसीक्यूज कला परे यू विल बी वेरी मच क्लियर कि हमर फिजियोग्राफिक डिविजन्स रे एक्चुअली कौन कंडीशंस और केमती कौन पैराफोनिया अछि. ओके सो लेट अस स्टार्ट टुडेस सेशन. तो जो माने मोर ऑलरेडी स्टूडेंट्स अच्छंती से माने तो ईवीएस पई ओएसएससी सीजीएल पई ईवीएस पई परचेस करिसंती. सो डायरेक्टली यू कैन डाउनलोड दिस ऐप और यू कैन कॉल ऑन दिस नंबर एंड अपन क्लास इज ऑलरेडी ओवर. आ दीटा क्लास अच्छी सम फॉरेस्ट रिपोर्ट फॉरेस्ट सर्वेस ओडिशा क्लाइमेट बजेट एति पेंडिंग अच्छी ए सब जिनस सरला पर आ दीटा तीनटा क्लास रे हम रिवीजन विथ एमसीक्यूज भी करिवु. सो अपन एथरे जॉइन भी हे परिवे बहुत फास्ट फॉरवर्डर भी अपन देखि परिवे. आ जो माने पर्टिकुलरली वर्ल्ड ज्योग्राफी में भी बहुत इंटरेस्टेड अच्छंती इधर हमें चारिटा क्लास रे सारिवी. सो एबे दीटा क्लास सरीची आ दी तीनटा क्लास लागि पारे. सो आ दी तीनटा क्लास रे पूरा पिन पॉइंट क्रिस्पी नोट्स आपण पाई परिवे. सो यू कैन आल्सो कांटेक्ट दिस नंबर इफ यू आर इंटरेस्टेड फॉर वर्ल्ड ज्योग्राफी. नाउ जेतो हमरो टॉपिक इज इंडियन फिजियोग्राफी डिविजन्स वी विल स्टार्ट आवर टॉपिक फॉर द बेस्ट 40 एमसीक्यूज. आमे चेष्टा करिबा कि ए सब जाक क्वेश्चंस व्यू रे आमे कवर अप करि दबा. ओके सो लेट अस स्टार्ट. Please check audio and video. Is it clear for you? Please check your audio and video. Greetings. Please check the audio and video and get me, give a thumbs up so we can proceed. किछि पिला माने मते कहिथिले कि सर आपण जहाँ भी कले तो यार पीडीएफ आपण दे देबे. सो पीडीएफ आई विल शेयर दिस पीडीएफ. आई विल शेयर ए क्लास सरला परे जहाँ भी यार पीडीएफ हबो. सो पीडीएफ मु ग्रुप चैनल रे भी शेयर कर देबी. द चैनल नेम आशुतोष सर VSC. तो एटा मोर यूट्यूब चैनल भी. दिस इज आल्सो माय टेलीग्राम. दिस इज ऑल्सो माय यूट्यूब चैनल. दिस इज ऑल्सो माय टेलीग्राम चैनल. ए दुटा रे आपण जॉइन हो टेलीग्राम रे जॉइन हेले आपण डायरेक्ट क्लास सरला पर पीडीएफ भी आपण पाई जिवे. ओके थैंक यू फॉर द थम्स अप. आई मीन द वॉइस इज क्लियर, वीडियो इज क्लियर. सो लेट अस स्टार्ट आवर डिस्कशंस. देखो व्हिच फिजियोग्राफिक डिवीजन इन इंडिया और व्हिच फिजियोग्राफिक डिवीजन इज नोन एज द वाटर टावर ऑफ एशिया. तो वाटर टावर माने पानी. पानी माने पानी कोठु आसीबो वर्षा हबो किंबा नदी हबो. तो एशिया पई जेतले हम इंडिया रो मैप करूछ. सो व्हेन वी परफॉर्म दिस इंडिया এই जो पोर्शन आपनकर होची फ्रेंड्स एबे देखन तो कोस्टल प्लेन. तो कोस्टल प्लेन इज अ वेरी सेपरेट एंटिटी. दिस इज कोस्टल सो वी आर नॉट बॉदर्ड अबाउट दिस कोस्टल. हमरा नदी कोस्टल रे आसी की डिपोजिट हुए बट नदी कोटु बाहरे जोटु बाहरे सेटा को हमें टैंक हाउस की स्टोर हाउस की पावर हाउस बोली कहिबा. राइट. सो नाउ इफ यू विल सी पेनिनसुलर प्लेट्यू. सो पेनिनसुलर माने कोन 3 साइड्स वाटर 1 साइड लैंड. सो दिस साइड इज वाटर अरेबियन सी. दिस साइड इज वाटर बे ऑफ बंगाल. दिस साइड इज वाटर इंडियन ओशन. ए तीनटा साइड वाटर अच्छी. तीनटा साइड वाटर अच्छी बोली this portion of India is known as peninsular India. So this cannot be the answer because 80 river ase but water store nahi. So water store where you will find in northern plains or
these two options are eliminated. Okay, so answer may be northern plains or Himalayas. तो Himalayas हमें answer कही परिबा because Himalayas रो हमको अधिका Indus, Ganga, Brahmaputra, all these type of rivers are flowing. Okay, so एठी आपनकर जो mountain regions उडा अछंती इंडिया रो ए माउंटेन्स रीजन रो हमरो रिवर्स बाहरंती ए जो नदी उडा जाउछंती ए नदी उडा को हमें नॉर्दर्न प्लेन्स बोली कहिबा किंतु बाहर होचंती कोठी पहाड़ पर्वत रो सो द राइट आंसर हियर विल बी northern plains. The right answer will be northern plains or Himalayas. So what is your right answer? Right answer. तो अपना northern plains जो कहउछंती पिला माने northern plains will not be the right answer. Northern plains यार concept आउ टिके दी तीनटा क्वेश्चन पर कहबी किंतु northern plains को एरिया आम इंडिया रो जो पोर्शंस उडा देखिबे नाउ दिस इज योर हिमालयस रो जो पानी बाहरिला तो पानी बाहरला माने टावर हाउस कोठी पावर हाउस कोठी पानी बाहरला कोठू पानी बाहरिला हिमालय रु तापरे तमर ए एरिया गैंगटिक प्लेन हो कि नॉर्दर्न प्लेन हो एठी फ्लड करू हमको किछि प्रॉब्लम नहीं पानी जदी आसीबनी ताले फ्लड किंदी करिवो पानी आसुची कोठू टांकी कोठी अछि हिमालयस सो हियर द मोस्ट बिफिटिंग आंसर विल बी हिमालयस यस यू हैव गिवन इट राइट द मोस्ट बिफिटिंग आंसर इज हिमालयस ब्यूटीफुल excellent let us move to the next question. The northern plains have been formed mainly by the rivers. Just mo ethi apanko introduction deli. Having this beautiful Himalayas, ei Himalay kshetra ru jo nadi uda amaro baharile, to nadi uda baharile jo now if you will see ei Himalay ru ei jaga ro hi apanko Indus, ei jaga ro hi apanko Brahmaputra. From here also you will find Ganga. So all these major rivers are formed northern plains. तो northern plains कोटा जोटा north रे अछि तो northern plains north रे अछि ना तो हाले ऑप्शन जो देछि आपन को नर्मदा तापी माही नर्मदा इज ए दिस रिवर इन पेनिनसुलर रिवर तो हमको पेनिनसुलर विषय रे कथा ही होउनी तो पेनिनसुलर हमको कथा नहीं हमको इंटरेस्ट अछि नॉर्थ पोर्शन तो पेनिनसुलर रे आपन को नर्मदा जीवो सो दिस ऑप्शन इज एलिमिनेटेड पेनिनसुलर रे आपन को गोदावरी कृष्णा कावेरी जीवो दिस इज आल्सो एलिमिनेटेड पेनिनसुलर रे ओडिसास लॉन्गेस्ट रिवर महानदी भी जीवो दिस इज आल्सो एलिमिनेटेड तो जेहेतु आपन को नॉर्दर्न प्लेन्स पचारिछि ताले only option left is with Indus and Ganga and Brahmaputra. Okay, very good. B, beautiful. Question को बुझिया को अपन आंसर जानी चंती ठीक अछि किंतु जो वे मैं अप्रोच करछि सेटा को अपन देखिबे so it will help you in a lot of clearing confusions. Okay, now which of the is the oldest physiographic divisions of India? ओल्डेस्ट फिजियोग्राफिक डिवीजन ए जो चारिटा फिजियोग्राफिक डिविजन्स लिखिछि जदि आमे एठी चित्र रे आंकिबा ए चारिटा फिजियोग्राफिक डिविजन्स को फ्रेंड्स तो आमे देखिबा दिस पोर्शन इज हिमालयस दिस पोर्शन इज योर कोस्टल बेल्ट so this portion is your coastal belt and this much portion is your peninsular plateau and this one is your northern plains है ना northern plains तो ए भितरु सबठु ओल्डेस्ट कोटा एबे आमे केमथि जानिबा काहे आमे तो देखुचे कि गोदावरी रिवर ता पूर्व तो गंगा रिवर थिला तो आपण भाबिबे कि हिमालय तो जेतेबेले पृथ्वी फॉर्म हेतिला आज जो सुंदर सातटा कंटिनेंट सेतेबेले हमर इंडिया वाज लाइक दिस वाज वन ऑफ द लैंड 16 लाख वर्ष पूर्व जो प्री कैम्ब्रियन इरा हेतिला तो सेइथरे दिस लैंड वाज नोन एज गोंडवाना लैंड ए लैंड को गोंडवाना लैंड कहउछंदी आ बाकी सब समुद्र रे बुडी थिले दैट समुद्र वाज नोन एज थेटिस सी तो जेतेबेले इंडिया रो फॉर्मेशन हेई थिला तो देखो तो इंडिया रो एतिकी पोर्शन बुडी की थिला सॉरी एतिकी पोर्शन लैंड अवेलेबल थिला इंडिया रो एतिकी पोर्शन वाज नॉट अवेलेबल एट दैट टाइम तो ए जेहेतु इंडिया रो ई पोर्शन अवेलेबल थिला ताहले ए प्लेन्स को हमें इंपोर्टेंस दबा तो सबुठु पुराना प्लेन्स की आसीबे सबुठु पुराना प्लेन्स your Himalayas cannot be the answer it was not in the picture northern plains was not in the picture coastal भी आपनकर coast पाखु को नथिला this was also not the answer so the only option left was peninsular plateau so peninsular plateau बहुत पुराना टाइम रे फॉर्म हेतिला ए जगह रे बहुत वोल्केनिक इरप्शंस है कि डेक्कन प्लेट्यू भी फॉर्म हेतिला ओके सो फॉर दैट इज द रीजन ओल्डेस्ट फिजियोग्राफिक डिवीजन ऑफ इंडिया इज पेनिनसुलर प्लेट्यू
तो फ्रेंड्स एथरे आपनको गोटे क्वेश्चन पचारि पारे ए वेरी सिंपल क्वेश्चन एपटे आपनकर होची ईस्टर्न घाट एंड दिस इज वेस्टर्न घाट राइट और दिस इज ईस्टर्न घाट एंड दिस इज वेस्टर्न घाट तो इमिति भी क्वेश्चन पचारि दे पारे व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द ओल्डेस्ट ईस्टर्न घाट ओल्डेस्ट ना वेस्टर्न घाट ओल्डेस्ट ईस्टर्न घाट ओल्डेस्ट ना वेस्टर्न घाट ओल्डेस्ट सो व्हिच इज द oldest among these two this oldest is eastern ghat this is a very important point try to note it up okay chalant hey gala clear okay next himadri fourth number question himadri range is also known as what the himadri ame kahaku kahuchi okay himadri so what happens कि जेतबेले आमे फिजियोग्राफिक डिविजन्स पढुचे फ्रेंड्स तो फिजियोग्राफिक डिविजन्स रे एई जो पोर्शन टा होची एई पोर्शन को आमे ट्रांस हिमालयस बोली कहूचे कोन कहबा ट्रांस हिमालयस आ ता तळु को जो पोर्शन आसुची एई पोर्शन को आमे हिमालयस बोली कहूचे एबे जदि आपनकर बहुत बड़ बड़ हिमालय अछि बहुत बड़ बड़ हिमालय अराउंड 8 किलोमीटर्स ताहले आमे ताको कहबा ग्रेटर हिमालय तार अधा साइज रो जदि अछि 4 किलोमीटर रो ताहले आमे ताको कहबा लेसर हिमालय आउ ताठू भी छोट जदि 1 और 2 किलोमीटर पर्यंत अछि छोट छोट घाटी उडा ताहले आमे ताको शिवालिक्स बोली कहबा जोटा आपण इंडियन फिजियोग्राफी डिवीजन रे हमरो एई पोर्शन रे आपण देखिबे अधिका बड़ बड़ पहाड़ को अधिका बड़ बड़ को सही ग्रेटर हिमालय को हमें माउंटेन्स कहूचे लेसर हिमालय को हिल्स कहबा आ शिवालिक्स को हमें प्लेट्यूज बोली कहबा ओके एटा होची कंडीशंस तो एई जो जिंस उडा अछंती आपनकर कोट सॉरी एई जो जिंस उडा अछंती आपनकर कोठी आपण पाइबे ना इफ विल परफॉर्म दिस इंडिया इफ विल परफॉर्म दिस इंडिया देखो ये मु इंडिया ड्रॉ कली आउ ए जगह मु कली ग्रेटर हिमालय लेसर हिमालय एंड शिवालिक्स ए तीनटा जिनस कली राइट ग्रेटर हिमालय फर्स्ट वन इज ग्रेटर हिमालय लेसर हिमालय शिवालिक्स तो ग्रेटर हिमालय माने कौन बहुत 8-8 किलोमीटर पहाड़ यही ग्रेटर हिमालय रे ही आपनकर वर्ल्ड रो सबुठु हाईएस्ट पिक पाइबे माउंट एवरेस्ट अच्छी आपनकर नेपाल रे बट ग्रेटर हिमालय रेंज रे पाइबे राइट तो यही ग्रेटर हिमालय को आमे कहूचे हिमाद्री दिस ग्रेटर हिमालय अनदर नेम इज नोन एज हिमाद्री सिमिलरली लेसर हिमालयस को आमे कहूचे हिमांचल and Shivaliks is a local term so Shivaliks means Shivaliks तो क्वेश्चन आपन कौन देला कि हिमाद्री रेंज तो हिमाद्री रेंज आमे कहा को कहूचे ग्रेटर हिमालय वर्ल्ड रो सबुठु बड़ माउंटेन ग्रेटर हिमालय कोठी अछि वर्ल्ड रो सबुठु बड़ माउंटेन ऑन ग्रेटर हिमालय माउंट एवरेस्ट इट इज द आंसर सो हियर द राइट आंसर इज सी इट इज सी एक्सीलेंट ओके वेरी गुड ब्यूटीफुल बहुत बढ़िया प्रणाम 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 okay which mountain range separates the Deccan Plateau from the coastal plains of Arabian Sea it's a very simple question being asked so Arabian Sea it is present here this side is your Arabian Sea is present here and this portion is known as Deccan Plateau तो यांको दी जनक मझिरे किए अछि भाई जे भी अछि तमे जानिछ long chain of continuous mountains so these mountains are nothing but Western Ghats WG very good Swadesh Aishwarya Saran so beautiful right everyone is giving C very good beautiful answers beautiful now moving to the next excellent बहुत बढ़िया आंसर आपण माने कहउछंदी एमती पढ़िबे डेफिनेटली सक्सेसफुल हेबे ओके फ्रेंड्स नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट concept now tell me
ए क्वेश्चन आंसर कोंत द भाबर रीजन लाइज वेयर इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आउ ए क्वेश्चन आपन को बहुत सारा कांसेप्ट रो फंडा क्लियर हे जिवो द भाबर रीजन लाइज वेयर सी along the foothills of Sivaliks along the foothills of Sival ए कांसेप्ट रे आपण पांचटा कांसेप्ट पाई परिबे पांचटा कांसेप्ट पाइबे now listen okay let me help you with this question is Bhabar region right so let us do one thing मैं आपन को देखे दउची कोन होची एक्चुअली रीजन ता कोन now friends this is your mighty Himalayas ये रहिले आपन को हिमालय तो हिमालय रु वर्तमान आपनकर नदी बाहरिले हिमालय रु आपनकर नदी आसीबा स्टार्ट हैला ए नदी जो आसिला तो हिमालय पाखे बहुत बड़ बड़ ये देखो ये नदी आसिला ये नदी आसिले ये नदी आसिले तो स्टार्टिंग रे जो किलोमीटर्स रोची अराउंड 8 और 16 किलोमीटर तो स्टार्टिंग रे आपन को 8 टू 16 किलोमीटर पर्यंत ए जो जगह उड़ा अच्छी एटा को हमें प्लेन बोली कहिबा बिकॉज ऑफ द फुटहिल्स ए जगह रे बहुत आपन पाइबे बालू पत्थर 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 कंकड़ पाइबे कारण हिमालय रो सेडिमेंट्स धरिक आसे आउ ये सेडिमेंट्स उड़ा ये बेसी धरिक आसी पारिबनी हेथि पई सब बेले बेले सेडिमेंट्स उड़ा मिस हे जिवे तो बेले बेले हेई पारे कि जो नदी फ्लो होची आंक भितरे हिडन हे जिवो नदी आंक भितरे हिडन हे जिवो पहाड़ तळे जो नदी आसुची पत्थर तळे दैट विल बी रिगार्डेड द आंसर तो जो जगह रे नदी फ्लो स्टार्ट हैला बड़ बड़ पत्थर धरिकी आसिला एई जगह को आमे कहूचे भाबर रीजन एई जगह को आमे कहूचे भाबर रीजन एबे जो भाबर रीजन फाइंड आउट करले फ्रेंड्स आपण माने भाबर रीजन नाउ सी दिस भाबर रीजन एक्चुअली एटा कोठी ए जो रीजन टा 8 और 16 किलोमीटर पर्यंत आपण भाबर रीजन पाइले ए रीजन टा कोठु बाहरले एटा हिमालय रु तो एटा को आमे कहबा हिमालय रा पाद तळु सो इट इज नोन एज फुटहिल्स ऑफ हिमालयस इट इज नोन एज फुटहिल्स ऑफ हिमालयस खाली एतिकी नहीं ये जेतेबेले आगु को गला तापर अराउंड द नेक्स्ट फेज अराउंड 15 किलोमीटर टू से 30 किलोमीटर तो 15 रु 30 किलोमीटर भितरे आपणकर कौन रोची यही जगह नदीर स्लोप आउ टिके अधिका बढ़िबो नदी आउ टिके स्पीड रे आसीबो तो नदी जेतेबेले स्पीड रे आसीबो से जगार माटी उडा धोई के आसीबो तो एति की जो रीजन 30 किलोमीटर एटा को आमे कहूचे टेराई रीजन ए जगह अगर लोक रोउ नथिले तो नदी जेतेबेले हिमालय रु फास्ट स्टार्ट हैला भाबर तापर पत्थर पत्थर को आनी परलानी पत्थर उडा स्टॉक रही गले पत्थर तळु माटी जो पानी बाहर के आसला दैट इज टेराई एबे जो टेराई आसला ए टेराई दी पार्ट रे डिवाइड हे जिवो फ्रेंड्स ए टेराई को हमें दी पार्ट रे डिवाइड कर दबा कोन ना जो एतिक रीजन जोठी एक्चुअली नदी उडा पसिले तो हेई पारे सही जगह रे बहुत जोरे बन्या भी हे जिवो जदी बन्या हे जिवो सही जगह रे फ्लड सिचुएशन भी हबो किंतु फ्लड सुखी गले लोक माने सही जगह रे चाष भी करि परिबे तो जदी लोक माने चाष करूचंती ताहले सही जगह रे बहुत भल सॉइल भी थिबो सो जेहेतु लोक माने एठी चाष करूचंती एई जगह को आमे कहिबा खादर कहीं ना जेतोले जोरे नदी आसला सब माटी उडा को धरी की पळे आसला सो दिस खादर इज नोन एज न्यू एलुवियल आउ जो बहुत दूर को रहिले एरिया माने नदीर मेन स्लोक नदीर जो मेन स्रोत ये एठी आसिला बोली फ्लड कला आउ फ्लड सुखिला परे लोक चाष कले खादर इट इज न्यू एलुवियल सॉइल किंतु दूर को कौन है फ्रेंड्स दूर को आउ एते नदीर इंटेंसिटी आपण देखि पारले नाही तो एटा को आमे कहूचे भांगर this one is known as bhangar and bhangar is ultimately also known as old alluvial गोटे कॉन्सेप्ट रे आपण केते जिंस पाई गले फ्रेंड्स अंडरस्टूड सिंपल तो आमे आउथरे कोन बुझिले फ्रेंड्स कि हिमालय रु जेबे नदी बाहरिले बड़ बड़ पत्थर धरिके आसिले सेउडा भाबर से पत्थर आसी पारलेनी गोट जगह रही गले ता तळु पानी आसिला तेराई तेराईटा दी पार्ट रे डिवाइड हैला जो एरिया रे फ्लड हे गेला बढ़िया चाष हबो काहे ना फ्लड सुखिले चाष हबो खादर ओल्ड एलुवियल आ जोटा नुआ एरिया है गेले सेठी पानी एते जाई परिबनी न्यू एलुवियल सो खादर एंड भांगर एवरीबॉडी क्लियर अंडरस्टूड फ्रेंड्स गिव मी अ थम्स अप और एनी कॉइंस व्हाटएवर अंडरस्टूड गोटे क्वेश्चन में एति की सब कांसेप्ट देखिले एवरीबॉडी क्लियर आपण से वीडियो पॉज करके स्क्रीनशॉट भी नहीं पारिबे ए जा एवरीबॉडी क्लियर ओके
तो गोटे जगार आपण सब जगह शिखिले कि जो हिमालय अच्छी हिमालय रो फर्स्ट एरिया इज भाबर, तापर नेक्स्ट एरिया इज टेराई, तापर जो होची दिस इज नोन एज खादर जोटा कि फर्टाइल, खादर इज फर्टाइल एठी लोक चाष करती, सो दिस इज ऑल्सो नोन एज ओल्ड एलुवियल, आउ दूरकू जोटा रहिले दिस इज नोन एज भांगर. So foothills of Himalayas, along the foothills of Himalayas. Okay, along the foothills of Himalaya. Next, which plateau is rich in black cotton soil? तो एटा आपण जानी थिबे कि black cotton soil is another way it is also known as regur soil, right? तो ब्लैक कटन केमती फॉर्म हुए वोल्कानिक इरप्शंस रे. एबे जस्ट आमे पढ़ले कि इंडिया जो फॉर्म हेतिला गोंडवाना लैंड पर एटी बहुत वोल्कानिक इरप्शंस हेतिला. तो इंडिया रो एतिकी पोर्शन जो मालवा प्लेट्यू रे आपन को मिलुची, ए मालवा प्लेट्यूटा एक्सटेंड हेची टू डेक्कन प्लेट्यू, सो इट कवर्स ए मेजर पोर्शन ऑफ द डेक्कन प्लेट्यू. So here the right answer we will prefer here is to Deccan Plateau. Simple. Chota Nagpur Havani because it is the mineral resources. Malwa Plateau re volcano अच्छी, Malwa Plateau re black soil मिले, किंतु large extension Malwa Plateau is extended to this area. Okay, so the most befitting answer will be Deccan Plateau. Okay. Next, हाँ yes, एठी माटी उडा कौन हैला फ्रेंड्स, जस्ट ए करेक्शन, एठी जो माटी उडा आसिले जोरे पानी नदी आसिला, नदीटा बहुत जोरे आसिला, तो बहुत जोरे आसिला नुआ माटी नहीं कि आसिला, सो ए नुआ माटी पय आमे एटा को न्यू एलुवियल लिखिबा. आ एटारे तो नदी प्रलय करि परनी, जहा अछि पुराना अछि, तो एटा को हमें ओल्ड एलुवियल बोली कहिबा. थैंक यू. एस्पायर टू एस्पायर, एस्पायर टू एस्पायर क्या नाम है, वेरी गुड. ओके, ठीक अच्छे फ्रेंड्स. एथरे खादर कौन है, बहुत जोरे नदी पानी पळे आसला, पुणी पहाड़ पर्वत माटी टाणी आंदेला, नुआ माटी आसला, सो दिस इज नोन एज न्यू एलुवियल, दिस वन इज ओल्ड एलुवियल. से जगह में ओल्डा लिख देथली. ओके ठीक अच्छे, ओके इट्स ओके, ठीक है, भल है, मो आखि पड़गला कहीदेले. चलो थैंक यू. नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट, एस्पायर टू एस्पायर. थैंक यू. The Aravalli range extends from Aravalli range extends from. So we everybody know कि Aravalli is the oldest mountain of India and ये होची अपनकर Aravalli. That means it starts from Gujarat. It covers major portions of Rajasthan, a little portion of Haryana, and then it reaches to Delhi President House, Badipate. So this is the sequence. आपन को पचार दबो कि अरावली माउंटेन प्रेजेंट इन हाउ मेनी स्टेट्स, तो लिखिबे 3 स्टेट्स. आपन को पचारिबा इट कवर्स व्हाट इज द रूट ऑफ अरावली, देन रूट इज गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, देन इट इज दिल्ली. ए हाँ ब्यूटीफुल, गुजरात टू दिल्ली, बट दिस इज द सीक्वेंस. शिवानी एक्सीलेंट. ओके सिंपल, बहुत बढ़िया. एंड एज यूजुअल सब बेले आपण एटा मन रखिछंती. दिस यू नो फॉरएवर and you must know it forever. Western Ghat ro highest peak is 2695 meters. Eastern Ghat ro highest peak is 1690 meter. It is Jindhagada, Araku Valley, Andhra Pradesh. And या पाखेरे Munnar Hills आपण पाइबे in the state of Kerala, and it is Annamadi, Annamodi. तो आजिकली एग्जाम रो डेट रो जिम कंडीशंस हमको हाइट भी पचारुची, राइट? तो वी हैव टू आल्सो मेंशन द हाइट. सब हाइट नहीं, जोटा हमको दरकार, दिस हाइट एंड दैट हाइट. Annamodi, excellent. Next, the northern plains are mainly composed of
Northern plains. Question number 10. Question number 10, friends. The northern plains are mainly composed of which type of rocks? C. Simple. Because northern plains एबे एबे आमे पढ़ी थिले तो गैंगटिक प्लेन्स तो एठु जो रिवर्स गुड़ा आसिले तो एथरे बहुत भल चाष हुए आ इंडिया रे आमे जानिछे कि सबुठु बेस्ट चाष हुए को जगह रे इन एलुवियल सॉइल द मोस्ट फर्टाइल सॉइल एलुवियल सॉइल इज द मोस्ट फर्टाइल सॉइल ये एतिकी फर्टाइल सॉइल कि यार द पीएच इज द बेस्ट पीएच it is having the best pH which is 7 is its best pH. Okay, excellent. Next, को फिजियोग्राफिक डिवीजन इंडिया रो सबुठु अधिका एरिया कवर करूछ? Simple thing, maximum area. Alluvial, excellent. Friends, maximum area. तो maximum area, हाँ B, very good, right one. अच्छा, first is peninsular, beautiful. ठीक अछि, हमारा इंडिया रो. Now if you'll see, most of the areas are predominantly dominated by this peninsular plateau. सो एटा हमर इंडिया रो 3/4 सरी होला किंतु जदि हमें सेकंड कहा को कहबा ताहले आपण कहा कहबे फर्स्ट इज पेनिनसुलर सेकंड इज द नॉर्दर्न प्लेन्स सो नॉर्दर्न प्लेस इज सेकंड द फोर्थ वन इज द कोस्टल हिमालयस इज थर्ड and this is the first माने as per this classification. Okay, as per this classification this should be the answer. Very good, very good. Next, Purvachal hills are located along where? Okay, so along the foots of northeast states जो देखिए आपण जो अरुणाचल प्रदेश रो हमर पसुची तो इंडिया म्यांमार रो बेल्ट रोची. ओके, सो दिस वन दिस वन दिस वन दिस वन तो ए चारिटा जिनस मन रखिबे ए चारिटा जिनस को ही हमें मिसई की कहूचे पूर्वाचल हिल्स. पटकाई नागा, दिस वन इज पटकाई और पटकाई बूम, दिस वन इज नागा हिल्स, दिस वन इज मिजो हिल्स and this one is Manipuri hills. Manipur. Okay, तो Manipuri hills हम कह दउछे Manipur. तो एथरे पुणी एथरे क्वेश्चन पड़ जाउची कि एटा तो हेगला आपन का नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट तो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट रो हाईएस्ट पीक अछि नागा हिल्स रे जोटा को हमें को पीक कहउछे नॉर्थ ईस्ट रो हाईएस्ट पीक. हाईएस्ट पीक, हाईएस्ट पीक. कैन यू टेल मी व्हाट इज द हाईएस्ट पीक? Highest peak, it starts with S, Saramati peak. It is Saram. तो आपण को पचार दबा कि नागा हिल्स रो सबुठु हाईएस्ट पीक सारामती और यू कैन से कि नॉर्थ ईस्ट इंडिया और नॉर्थ ईस्ट पोर्शन ऑफ इंडिया यार हाईएस्ट पीक किए दैट इज आल्सो सारामती. जेमिति आपण पढुचंदी वेस्टर्न घाट रो हाईएस्ट पीक अन्नामुडी, ईस्टर्न घाट रो हाईएस्ट पीक Jindhagada, like that northeast highest peak is Saramati. So Purvachal hills are located in West India to habani, South India to habani, Central to habani. So only option left is northeastern India. Very good. Next, which of the following is not a part of the peninsular plateau? It's very simple. हमें जानिए friends, peninsular plateau is this region. This region is our peninsular India. So
Malwa is present here. Yes, this is present here. But question is asking ki which is not a part of it. Okay, not a part of it. Chota Nagpur, Bundelkhand, Wingelfand, it is present here. Meghalaya and Terai. तो इथरे को आंसर आपण देबे मेघालय एंड तराई तो को आंसर देबे तो हिमतिर भी कन्सेप्ट पढिचंती तेराई तो ऊपर रहउथिला ओके तो तेराई आंसर हबो किंतु मेघालय प्लेट्यू काहे की हे परिबनी काहे ना मेघालय प्लेट्यू एबे आपण जो एठी देखिले पूर्वाचल हिल्स तो ये है गला फ्रेंड्स पूर्वाचल एमते क्वेश्चन पढुची ये पूर्वाचल हिल्स एंड आवर दिस पेनिनसुलर प्लेट्यू इज कनेक्टेड हियर तो पेनिनसुलर प्लेट्यू तो पेनिनसुलर प्लेट्यू आउ पूर्वाचल हिल्स रे को स्टेट सेपरेट करे मिकिर हिल्स it is Mikir Hills and Mikir Hills is present in the state of Assam. तो इमते क्वेश्चन पड़े कि पूर्वाचल hills and peninsular plateau are separated by which hills? Mikir Hills. So but here the answer is Terai. You know this is Terai क्या ना Terai तो से ऊपर portion है northern plateaus पाके रोइला. Okay. The highest peak of Nilgiri. The highest peak of Nilgiri. You everybody know it is Doda Beta. So Doda Beta is the highest peak of Nilgiri and hill station भी अपन को पचारी दिए some 2637 kilometers. तो देखो एटा simple अच्छी Western Ghat जदि अन्नामुडी पचारची highest peak अन्नामुडी रा hill station पचारले मुन्नार लिखिवे. Same thing Nilgiri रा highest peak is Doda Beta. अब जदि हिल स्टेशन पचारिबा ऊटी लिखिवे ओके गुरु शिखर पीक एटा में पढ़िथिले अरावली हिल्स रा हाईएस्ट पीक इज गुरु शिखर पीक सो अरावली रा हाईएस्ट इज गुरु शिखर पीक आ गुरु शिखर रा हिल स्टेशन कोन पिला माने यार हिल स्टेशन जोटा दैट हिल स्टेशन इज नोन एज माउंट एबू किंतु एबे करंट अफेयर्स कोची हमें माउंट एबू रो ना भी चेंज हे गला इट इज नोन एज अबुराज. So there is no Mount Abu now, it is Aburaz. So Araval's highest peak is Guru Shikhar. Guru Shikhar hill station was Mount Abu, but there is no such Mount Abu now because the name has been renamed. Name has been changed. Next question. Mount Abu. Aburaj. Trinath. Excellent. Aburaj. Stay updated. Very good. Aburaj. अरे बस करो अबू धाबी मत लिख देना अब. Western coast is divided into how many parts? So friends, western coast is divided into how many parts? This is the question. हमें जानी चाहिए समझते तीन ही ओके कोरोमंडल एंड नॉर्दर्न सरकार्स. तो कोरोमंडल तो हवनी बिकॉज कोरोमंडल इज प्रेजेंट हियर सो इट इज नॉट ए पार्ट ऑफ वेस्ट. Doab and Khadar Bangar तो सही स्टोरी सेट सॉरी जाए बाबर एंड भांगर दिस इज आल्सो कंप्लीटेड तो ऑप्शन ही हम पे नहीं तो ओनली ऑप्शन इज दिस कोंकण कानारा एंड मालबरा. सो दिस वन इज कोंकण, दिस वन इज कानारा एंड द थर्ड वन इज मालाबार. ओके तो ये जो तीनटा पोर्शन रहिले खाली एतिकी ही नहीं आपनकर कोठु को जाए जाउछंती. तो देखो कोंकण होची गोवा, गोवा रो आपन को ए जाए जीवो. देन फ्रॉम हियर इट विल गो टू मैंगलोर आउ सेटा जीवो फ्रॉम मैंगलोर टू कन्याकुमारी. कहीं इंडिया रे प्रथम वर्षा जो आसुची प्रथम वर्षा कोठी के आसुची प्रथम वर्षा मालाबार कोस्ट को आसुची. सो फर्स्ट वन इज गोवा टू the first one it moves from Gujarat to Goa. It moves from Gujarat to Goa, then Goa to Mangalore, Kannada, Mangalore to Kanyakumari, Malabar. So total how many coasts? 3 coasts. 3 पछले 3 भी लिखिवे कौन कौन अच्छी सेटा पछले भी लिखि देबे. Simple thing. Okay, very good. Next, which plateau is called the storehouse of minerals in India? स्टोर हाउस ऑफ मिनरल्स तो स्टोर पावर स्टोर ऑफ वाटर देख लो ओके तो स्टोर हाउस ऑफ मिनरल्स इन इंडिया. हाँ स्टोर हाउस कौन फ्रेंड्स? यस थैंक यू. यस
B, 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 B. Okay. Simple. Chota Nagpur Plateau. India re this Chota Nagpur Plateau is known as, it is also known as the Ruhr of India. It is also known as the Ruhr of India. Okay. Eastern Ghats are, the Eastern Ghats are what? So if here option is given us continuous and discontinuous, एथुरे आपण आंसर जान परिबे कि Western Ghat is continuous, but Eastern Ghat is discontinuous in nature. So Western Ghat is continuous and Eastern Ghat is discontinuous. This we know. So that is the reason कि Eastern Ghat are not continuous in nature. These are the discontinuous mountain range. But Eastern Ghat is oldest. Eastern Ghat is oldest than Western Ghat. This Eastern Ghat are oldest than Western Ghat. Okay. Next. Discontinuous. Very good, Ankita. Beautiful. एतिकरे तुम सब कॉन्सेप्ट क्लियर जे पूरा एंटायर इंडिया रा को जगह रे कोन अछि केमिति अछि काहेकि अछि कोबलिया अछि कोबलिया ऊपर अछि. Which desert lies in the northwest portion of India? This is north, this is south, this is west, this is east. Question is asking about northwestern. So northwestern is this portion. Northwestern means it is focusing on this. So this much transition it carried out by which desert? Thar. Simple, because Kalahari it is present in Africa. Africa continent ro ei portion re Kalahari achi, upare Sahara achi. Patagonia is present in South America continent ro ei jaga re achi. Sorry, ei jaga re achi apanଙ୍କର Atacama, and this one is Patagonia. Right side re achi Patagonia. It is a cold desert. It is a kind of cold desert. Okay, Patagonia is a kind of cold desert. Ladakh to habani because it is present in north, and question is very specific, northern, northwest. So this is the answer. The world's largest delta is formed by, so I have nothing to say. World's largest delta, eastern flowing rivers as they form delta. So world's largest delta is formed by this Ganga and 8 jo aschi Brahmaputra. So forming a delta, 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 delta square. So biggest delta in the world, it is known as Sundarban Delta. The Sundarban Delta is world's biggest delta. This is the world's biggest delta, and world's biggest mangrove forest also. This is also world's biggest mangrove forest. This is also the world's biggest mangrove forest. World's biggest mangrove forest present in Sundarban, some area of West Bengal, and Ganga goes this Bangladesh is also there, Brahmaputra. So Ganga river, and this one is Brahmaputra river. So right answer is Ganga and Brahmaputra. See, very good. Guru Shikhar is the highest peak of, just abhi ame karithile. Now this was the Aravalli mountains. Apna ye bhi padithile ki Aravalli, Gujarat, Rajasthan, then Haryana, and then Delhi. The Aravalli mountains ro highest peak was this Guru Shikhar peak, and the latest renaming change of the famous hill station was Abu Raj. Question. So everything is interconnected. Aravalli. Beautiful. Beautiful. Right answer, Aravalli. Excellent. It is Aravalli. Okay. Now, which river flows through a rift valley? Which river flows through a rift valley? Narmada. हाँ, अबू राजा भी आ रहा है, ठीक है, कोई बात नहीं. देखो, जो भी पहाड़ रेसिडुअल माउंटेन जदि आमे कहिबा, रेसिडुअल माउंटेन माने से जिमिति भी फॉर्म हो, वर्तमान नदी जाई 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 ता तळ खाई गलानी. Okay, so if this is a mountain range, now say this is Vindhyanchal. Similarly, this is also a mountain range.
दिस इज सातपुरा। तो यांक मझिरे जो सुंदर नदी वेस्ट कटिंग करके जाउची, दिस नदी इज नोन एज नर्मदा। जो नदी पहाड़ दीटांग मझिरे फ्लो हबो तांको आमे कहिबा रिफ्ट वैली। सो हियर द राइट आंसर इज नर्मदा। सिमिलरली फ्रेंड्स, सातपुरा तले भी आपण तापी अछि, तापी भी रिफ्ट वैली रिवर। व्हाई? बिकॉज एठी तले भी आपण माउंटेन अछि, अजंता माउंटेन्स। So that is also a rift valley. This is also Ajanta mountains. Now, okay. लक्षद्वीप आइलैंड्स एथरे वोल्केनिक इरप्शंस भी रहउची, एलुवियल डिपोजिट्स भी रहउची, तो आपण कोटा को देखले बेटर कहि परिबे। तो लक्षद्वीप आइलैंड्स आर मेनली कंपोज्ड ऑफ वोल्केनिक रॉक्स, ना कोरल्स कहबा, ना ग्रेनाइट, ना एलुवियल डिपोजिट्स। तो देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल एलुवियल होचंती, इट इज मोस्ट फर्टाइल सॉइल। The Andaman itself is somewhere in the vicinity of the Bay of Bengal, but major rivers are in India, so alluvial soil cannot be answer. Okay, granite and volcano ए दीटा होचंती interlink. Okay, काहे कि ना volcano eruptions हेले आपनकर को फॉर्म हुए igneous rocks, volcano eruptions हेले आपनकर igneous rocks form हबो। तो igneous rocks रो दीटा फेमस एग्जांपल, वन इज ग्रानाइट, वन इज बासाल्ट। सो ए दीटा एक्चुअली हिडन इंटरकनेक्टेड टू ईच अदर। वोल्केनिक इरप्शंस हेले ही आपनको इग्नियस रॉक फॉर्म हबो, एंड दिस इग्नियस रॉक्स आर नथिंग बट दिस ग्रानाइट एंड बासाल्ट। तो इथरे भी आपनको क्वेश्चन पचार दिए फ्रेंड, ग्रानाइट एंड बासाल्ट क्वेश्चन पचार दबो दीटा भितर हेवी किए, सो दिस बासाल्ट इट इज हेवियर। सो द ओनली ऑप्शन लेफ्ट विथ अस इज कोरल डिपॉजिट्स। सो फिजियोग्राफी डिविजन्स रे आमे दीटा जिनस देखुचे कि जदि आपन को अंडमान एंड निकोबार विषय रे पचारला, then the questionnaire is asking about the island, questionnaire is actually asking about the volcanoes। और जदि से लक्षद्वीप रे पचारला, ता माने questionnaire is indirectly asking you towards coral। so corals हमरा लक्षद्वीप रे भी आपण अधिका पाई परिबे। so here the right answer is B। Next, volcanic origin। तो which of the following islands are volcanic origin? तो आपण एथरो कोड आंसर देबे। देखंतु ए जो लक्षद्वीप अछि, लक्षद्वीप तळे आपण को मालदीव्स अछि। तो लक्षद्वीप एंड मालदीव्स आर सेपरेटेड बाय सम 8 डिग्री चैनल। लक्षद्वीप रे हमर सबुठु बड़ आइलैंड ना होची एड्रॉइट, सबुठु छोटो आइलैंड ना होची मिनिकॉय। तमाने मिनिकॉय आइलैंड तो जीवनी वोल्केनिक इरप्शंस, काने एबे जस्ट कहली कि लक्षद्वीप विषय पढ़ुछ तमाने कोरल्स उपरे, अंडमान उपरे पढ़ुछ तो वोल्केनो उपरे। तो जेहेतु एटा वोल्केनो उपरे पचारछि, तमाने हमको आइलैंड्स अंडमान रो दरकार। तो वोल्केनिक इरप्शंस पचारछि माने लक्षद्वीप आंसर हबनी। मिनिकॉय इज ए पार्ट ऑफ लक्षद्वीप आइलैंड्स। सो ओनली ऑप्शन इज अंडमान आइलैंड्स एंड बैरन। एबे अंडमान आइलैंड भी बहुत वैरायटी रही, टोटल को अपन अंडमान कहबे तो टोटल अंडमान रे कोन वोल्केनिक इरप्शंस होछि? नो, इट इज हैपनिंग ओनली इन वन एरिया, दैट इज बैरन आइलैंड। इंडियाज मोस्ट एक्टिव वोल्केनो इज बैरन आइलैंड। तो दीटा वोल्केनो मन रखिबे फ्रेंड्स, गोटे हे गेला बैरन, वन इज योर बैरन, अनदर वन इज नार्कोडम। गोटे हे गेला बैरन और नार्कोडम। ए दीटा रे डिफरेंस है, वंस अपॉन ए टाइम बैरन आइलैंड नार्कोडम दीटा जगह एक्टिव थिले, बट राइट नाउ दिस हैज बीन कैटेगराइज्ड इनटू एक्टिव। जेहेतु 5 वर्ष है नार्कोडम फाटी नाहंती, then it is silent, so we will say it is a dormant volcano। okay, simple friends, बुझा पड़ुची? हाँ, सिंपल हमको आंसर बहुत चूजी एंड इफेक्टिव दवर अच्छे ना। हाँ, चल नेक्स्ट आंसर। विंध्या रेंज सेपरेट्स, विंध्यांचल रेंज सेपरेट्स नार्कोडम कोठी? अरे फिजियोग्राफिक डिविजन्स जेबे पढ़िबे तो आपण जानिबे कि देखंतु अंडमान रो जो आइलैंड्स अछि, तो एबे मु खाली नॉर्थ अंडमान करूची। तो एटा नॉर्थ अंडमान रो राइट साइड, सॉरी राइट साइड यू हैव
barren. Left side you have Narcodam. So both these islands are present in the North Andaman. Okay, so Andaman, North Andaman, South Andaman, Little Island, all are there. एपटे पिला माने आंसर भी कहि देलेनी. Okay, Vindhyanchal range separates. What things Vindhyanchal is separating? Question number 24. It is separating what? So let us see where is Vindhyanchal. एबे एबे हमें देखथिले गोटे हिंट देखथिले कि विंध्याचल तळे जाउची नर्मदा. So Vindhyanchal is here. Vindhyanchal is here. And if you'll see the options, Eastern Ghat, Western Ghat, तो भाई ईस्टर्न घाट एपटे रहिले, वेस्टर्न घाट एपटे रहिले. चलो, हिमालयस इज हियर. ओके, कोस्टल प्लेन्स एंड प्लेट्यू, कोस्ट इज दिस, सो कोस्टल तो हमर हबनी. नॉर्दर्न प्लेन्स, हिमालय तळकु आपण पाइबे नॉर्दर्न प्लेन्स. नॉर्दर्न प्लेन्स आउ एटा हम को प्लेट्यू बोली कहूचे फ्रेंड्स. दिस वन इज योर पेनिनसुलर प्लेट्यू, राइट? दिस वन इज पेनिनसुलर प्लेट्यू, दिस वन इज नॉर्दर्न प्लेन्स. तो डेफिनेटली आंको दीटा मझिरे अछि हमर विंध्याचल. सो फ्रॉम हियर ऑनवर्ड्स द राइट आंसर विल बी ऑप्शन ए. राइट आंसर, oh shit, question number 24, no. Okay, next. Which coastal plain lies between the Eastern Ghats and Bay of Bengal? It's very simple. Lies between Eastern Ghat and Bay of Bengal. So now again I feel I'll do it. It is the same question here, friends. Simple. This is our Eastern Ghat and this is the Bay of Bengal. That's a simple question, a very simple question. So Eastern Ghat, this one is Eastern Ghat and this one is Bay of Bengal. So yanko majhire age insert ach. So this is nothing but Eastern coastal plain. Diagram re jodi apan ko mind re achi se automatically easily apan answer dei paribe. Okay, East coast, yes. Khadar refers to, Khadar में पढ़ी थिले फ्रेंड्स जो आसिला बाबर, बाबर तराई, तापरे आसिला flooded zone. Flooded zone is Khadar and this one is known as Bangar. Babar. So Khadar is नुआ माटी गोटा फटकिनी आनी दबो, पुणी फ्लड हैला, पुणी आथरो माटी आनिबो, नुआ आनिबो, न्यू एलुवियल. So it is known as new alluvial. फ्रेंड जो माने OSSC CGL मेंस पे सीरियस अछंती तो मोर EVS रो क्रैश कोर्स भी अवेलेबल अछि, पछरे देखि परिबे. वर्ल्ड ज्योग्राफी रो भी मोर सीरीज अवेलेबल अछि, जस्ट MCQ फॉर योर रिवीजन. तो आपन को ज्योग्राफिक पोर्शंस रे आपन को मेन फोकस जो लास्ट 2 इयर्स और क्वेश्चन पेपर देखिबे, इंडियन फिजियोग्राफिक डिविजन्स रो क्वेश्चन आछि, सॉइल्स रो आछि, फॉरेस्ट रो आछि एंड मिनरल्स रो आछि. तो फ्रेंड्स मु एई चारिटा सेक्शन रो आपन पई बेस्ट कलेक्शन आछि, जो थरे आपन किछि कांसेप्ट भी क्लियर हे जिवो, हे पारे किछि क्वेश्चन भी आसी पारे. वी विल डू आवर बेस्ट, यू आल्सो गिव योर बेस्ट. ओके, तो आज हमें फिजियोग्राफिक डिविजन्स ऊपर कले. सो आउ केबे मु आपन पई सॉइल्स पे एंड देबी, फॉरेस्ट पे एंड देबी, मिनरल्स पे एंड देबी, बेस्ट 20, 25, 30, whatever the questions I can get. Okay, next. Which is the highest peak in peninsular India? Question जहाँ भी पढ़ू, थोड़े concept clear है, everything will be clear. अब peninsular India is this total. ये peninsular India total है गला. तो जदि peninsular India total है ला, ताले total रा highest peak माने कौन? Western Ghat, Eastern Ghat. तो Western Ghat रा highest peak अन्नामुड़ी, Eastern Ghat रा highest peak जिंधागाड़ा थिला 1690, ये थिला जेति की सम 2697 जहाँ भी थिला. तो एटा होची सबुठु अधिका. तो एंटायर वेस्ट हो कि ईस्ट हो, वेस्टर्न घाट इज द हाईएस्ट. तो एंटायर दिस पेनिनसुलर प्लेट्यू रे हमर हाईएस्ट किए हेगला अन्नामलाई इज द हाईएस्ट. अन्नामाड़ी, अन्नामुड़ी, अन्नामलाई, अन्नामुद्दुमलाई जहाँ भी थिबो अन्ना वर्ड थिले, यू शुड प्रोसीड विथ द आंसर्स ऑफ अन्नामलाई. ओके, नेक्स्ट. The Satpura range lies between, Satpura range it lies between what? Okay, friends, answer. आमे तो जस्ट बेटा देखी थिले, this is Vindhyanchal. Lies between Ganga and Yamuna. The Ganga yard roile, Yamuna it roile, because this is like this India. So Ganga Yamuna cannot be the answer.
Narmada and Tapi river, Godavari and Krishna, ये गोदावरी ये कृष्णा, so this cannot be the answer. महानदी तो एपटे रहिला हट, तो गोटी ऑप्शन लिखला नर्मदा and तापी, तो this सातपुरा, तो if you'll see now विंध्याचल तळे ही अछि आपनका सातपुरा. So definitely a very beautiful question. नर्मदा विंध्याचल सातपुरा मझरे आमे देखिथिले नर्मदा रिवर, आउ सातपुरा तळे हमर जाउची तापी रिवर. So between Narmada and Tapi, we have which peak? Satpura. So here answer is Narmada and Tapi. Very simple. Understood? Next. हाँ ठीक है. Next. The northern Himalayas are commonly known as. तो नॉर्दर्न पटे हिमालयस को हमें कौन कहवा? Come on. Very good, Trinath, Swadesh, Ankita, Sagar, Ashish, Tanaya, Ruj, 9S, Aishwarya, Sachin, Malay, very good. Abhishek, very good, Kajal. A, so you're telling me answer A? अरे भाई अभी तो कंफ्यूज हो गए इसमें. क्वेश्चन नंबर 29. अच्छा आपण माने एटी पढ़ी ना ग्रेटर हिमालय, लेसर हिमालय और ता तळे अछि शिवालिक्स. ग्रेटर हिमालय इज नोन एज हिमाद्री, lesser Himalaya is known as Himachal, and Sivalix is also the same, it is known as Sivalix. The question is northern Himalayas. So now if you'll see, and I will bring the extensions, तो नॉर्थ पटे जो हिमालयस रोचंती, हिमालय नॉर्थ पटे बहुत बड़, तो बहुत बड़ माने आमे तम कौन कहबा? हिमाद्री. So here our right answer will be Himadri. सर मोरो एटा कंफ्यूज थिला, क्लियर हैला कि नहीं? क्लियर हैला कि नहीं? वाई कंफ्यूजिंग? इतने भल से पढ़िबा कौन हैला कंफ्यूजिंग? देखो so what it says, ए पोर्शन को हमें कहबा ट्रांस हिमालयस. ओके, ए पोर्शन को हमें कहबा हिमालयस. क्लियर? एबे हिमालयस माने, ए हिमालयस माने ग्रेटर हिमालय, लेसर हिमालय, शिवालिक्स. ग्रेटर हिमालय, लेसर हिमालय, शिवालिक्स. टॉप मोस्ट कौन? ट्रांस हिमालयस. ए ट्रांस हिमालयस रे पुनी तीनटा पहाड़ आसीबे. आपन को आसीबो काराकोरम, लद्दाख, जस्कर. कंसेप्ट क्लियर? तो नॉर्दर्न हिमालयस, नॉर्थ पटे जो हिमालय अछंती, देखो नॉर्थ होची एटा, नॉर्थ ईस्ट इज दिस. तो नॉर्दर्न पटे जो हिमालय अछंती, तो सेडों का हमें कौन कहबा? ट्रांस हिमालयस. सो हियर आवर राइट आंसर विल बी ट्रांस हिमालयस. वेरी गुड, बहुत पिला माने ठीक आंसर देथिले. इट इज नॉट ट्रांस हिमालयस. जरा कंसेप्ट थिला क्लियर हैला? सर आउ थरे. यस सर, थैंक यू सर. अच्छा आउ थरे एटा हे गेला ना, इजी. किछ ना, ये सिंपल तो कांसेप्ट से थरे जानिवे खाली. हां ये पोर्शन को अपन कहउचंती ट्रांस हिमालयस, and this portion is known as Himalayas. तो ए हिमालयस रे ही आपण तीनटा रेंज पाइबे. ग्रेटर हिमालय, ता तळको अछि लेसर हिमालय, एंड ता तळको अछि शिवालिक्स. ए जो तीनटा पोर्शन कहली, आ याठू भी मोस्ट इंटरेस्टिंग जिंस कि ट्रांस हिमालयस रे भी आपण तीनटा वेवर्ड पाइबे.
काराकोरम, लद्दाख एंड जस्कर। तेणु क्वेश्चन जहां भी पचारू कि भाई काराकोरम, लद्दाख, जस्कर कहार? ट्रांस हिमालयस रो। ग्रेटर हिमालय, लेसर हिमालय, शिवालिक कहार? हिमालयस रो। एबे क्वेश्चन पचारला आपन को कि नॉर्दर्न हिमालयस नोन एज ट्रांस हिमालयस। सिंपल थिंग, अंडरस्टूड? नाउ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग माउंटेन रेंजेस इज ए पार्ट ऑफ ट्रांस हिमालयस? ये देखो, एबे तुम नीचे आंसर को कौन नीचे आंसर को वेरी गुड, टेल मी द आंसर। एतिकी पोर्शन ट्रांस हिमालयस। आउ ए ट्रांस हिमालयस रे आपनकर आसिला फर्स्ट काराकोरम, तापरे लद्दाख, तापरे जस्कर। सो द ओनली ऑप्शन लेफ्ट इज काराकोरम रेंज। सिंपल, ओके। हाँ त्रिनाथ, क्लियर ना? कौन कंसेप्ट क्लियर नथिला? एपट सेपट पड़ी थिबो, एबे तो ठीक पाइलो ना? हाँ तो ठीक है, मालिक के घर में देर है, अंधेर नहीं। व्हिच इज द हाईएस्ट पीक इन द काराकोरम? काराकोरम रा हाईएस्ट पीक पिला एथरे बहुत ही गोटे इंटरेस्टिंग जिनस अछि, एक्सीलेंट इंटरेस्टिंग जिनस। तो जो माने किछि जानि चंती, हाँ से माने ठीक को भी कहि चंती। ऑप्शन सी, एवरीवन इज सेइंग ऑप्शन सी, बट एथरे K2, हाँ K2 तो ऑप्शन सी डेफिनेटली। देखो कौन होछि एथरे। तो दिस वाज द काराकोरम, दिस वाज द लद्दाख, दिस वाज द जस्कर। ठीक है सर। तो ए काराकोरम रे भी एमती पहाड़ अछंती। तो ए पहाड़ रे जोटा हाईएस्ट पीक, से हाईएस्ट पीक रो ना होची गॉडविन ऑस्टिन। ये एते ऊंचा हाईएस्ट पीक, एते ऊंचा हाईएस्ट पीक कि एटा वर्ल्ड रो रैंक होची 2। कहना वर्ल्ड रैंक 1 माउंट एवरेस्ट, ये वर्ल्ड रैंक 2। किंतु वर्ल्ड रे सेकंड बिगेस्ट माउंटेन को रेंज रे आसुची? काराकोरम। हेथि पई यार ना पड़ला K2, which is otherwise known as Godwin Austen. So that is the reason the right answer is K2. The famous Siachen glacier located in, हाँ कंसेप्ट जान दो, कंसेप्ट जानले आपन को बहुत इजी है जी बोला। कंसेप्ट जानले कोन लाइफ रे केबे भूलिबेनी। फेमस सियाचिन ग्लेशियर लोकेटेड इन, फ्रेंड्स आंसर। वेरी गुड, जंस्कार रेंज, एक्सीलेंट। जंस्कार रेंज, एक्सीलेंट, ब्यूटीफुल, वेरी गुड। बहुत जन सी कही, कंग्रेचुलेशंस, सी इज दी गलत जवाब है। ओके, सियाचिन ग्लेशियर। ओके, तो देखो कंसेप्ट कौन? पीर पंजल, वेरी गुड, बिल्कुल गलत जवाब। ठीक है, देखते हैं, वेरी गुड। नहीं, आप आंसर सही दिए हो, ठीक है, कोई गलत नहीं है। अटेम्प्ट इज गुड, अटेम्प्ट होना चाहिए। भूल हेले ही हमें शिखिबा, भूल तो मोर भी होची, मु भी तो सॉरी कहूची। नाउ लिसन केयरफुली, एक्चुअली थिंक कौन? एबे हमें कहबी वर्ल्ड रे सबुठु फर्स्ट हाईएस्ट माउंटेन, आपण कह देबे माउंट एवरेस्ट। ठीक। वर्ल्ड रे सेकंड हाईएस्ट, जस्ट यू हैव डिस्कवर्ड। वर्ल्ड रे थर्ड हाईएस्ट कंचनजंगा। तो कंचनजंगा होची हम इंडिया रो ना। तो वर्ल्ड रो थर्ड हाईएस्ट इज इंडियाज हाईएस्ट। वर्ल्ड रो थर्ड हाईएस्ट इज इंडियाज फर्स्ट हाईएस्ट। ओके, किंतु एक्चुअली काराकोरम थिला हमरा हाईएस्ट, बट काराकोरम हमरा नहीं, बिकॉज ए जो माउंटेन पिक जो रहुची एटा डिस्प्यूटेड पोर्शन है कि रहिला। दिस इज अ डिस्प्यूटेड पोर्शन बिटवीन इंडिया एंड आवर बेस्ट फ्रेंड दिस पाकिस्तान।
तो एई जगार जो युद्धटा होउची जदि तमे पहाड़ उपरे बसथिबो ताहले तळु सैनिक माने आसले गुली मारले तांको छाती रे बाजिबो किंतु तळु सैनिक माने जदि गुली मारिबे तुमको बाजिबोनी तो हमको एई ऊपर पोजीशनटा दरकार टू प्रोवाइड सेफ्टी तो ऊपर आमे बसचु आउ ये ऊपर एते ऊपर अच्छी एठी -52 डिग्री सेल्सियस आउ जेहेतु एठी युद्ध भी हेई सारिची तो हेति पई बहुत ऊंचा स्थान रे अछि आमे याको कहूचे वर्ल्ड्स हाईएस्ट बैटलफील्ड एंड वर्ल्ड्स हाईएस्ट बैटलफील्ड ही हमको कहूची सियाचिन ग्लेशियर सो दैट मीन्स सियाचिन ग्लेशियर ए K2 माने काराकोरम रेंज रे ही आसे सो इट कम्स अंडर व्हिच रेंज काराकोरम रेंज ओके काराकोरम हब हाँ हेला क्यों नहीं होगा डेफिनेटली होगा ओके काराकोरम अंडरस्टूड ना कांसेप्ट माने कौन चलचे जिंस ओके वेरी गुड चलो originates near the Kailash range in the Trans Himalayas. Oh, last 4-5 questions left. Come on. अरे बहुत बढ़िया करूछो मैंने. ब्रह्मपुत्र. ब्रह्मपुत्र. सिंपल. ट्रांस हिमालय. ये तो हमें पढ़ी ले ट्रांस हिमालय देखो ये इंडिया. ट्रांस हिमालय तो तुम्हें पढ़ी लो तुमको नक्शा मिली गला ट्रांस हिमालय दिस इज ट्रांस हिमालय तो ट्रांस हिमालय रे मानसरोवर लेक रो इंडस बाहरिले एपटो ब्रह्मपुत्र बाहरिले तो हे गला हमर आंसर सो दिस वन इज इंडस दिस वन इज ब्रह्मपुत्र कोई है क्या रिवर देखो तापी तो एपटे अच्छी हबनी कृष्णा तो एपटे गला गोदावरी तो एपटे गला हाँ ऑप्शन इज वेरी लॉलीपॉप बट स्टिल लॉजिक इज लॉजिक Okay, last 4 questions. Which cold desert of India lies in the Trans Himalaya region? तो ये बता अपन को पूरा कच्चा चिट्ठा क्लियर है गला. This one is Trans Himalayas. तो ये Trans Himalayas रे हमारा cold desert कौन? तो concept जाने के लिए वे घाएंगे आंसर दबो. हाँ चित्र काटला भट की नहीं आंसर. 100% right answer. 100% right answer हबो. Now tell me what is the answer? एक ही तो है. काराकोरम पास कनेक्ट्स व्हाट तो पे पासेस आप क्वेश्चन पड़े मुझे आपको होमवर्क दूसरी यू शुड मेंशन कि आपन एटा मन रखिया पड़िबो एटा आपन निजे होमवर्क करिवे कमेंट सेक्शन में लिखिबे जेमते कि खारदुंगला पास कनेक्ट्स व्हाट लीपू लेक पास कनेक्ट्स व्हाट आ गोटे पार्ट पड़े नाथुला पास कनेक्ट्स व्हाट एटा गोटे आपन को पड़े एंड जिलीपला पास तो ये चार्टा अपन को होमवर्क यू फाइंड आउट वेयर सिक्किम टू तिब्बत इज अवर लद्दाख एंड जैनपिंग काराकोरम पास सेमती अपन को पचार दबा इंडिया और चाइनीज भीतर पसिया पे पास कोटा दिस काराकोरम पास ओके चलो नेक्स्ट द हिल्स ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया आर कलेक्टिवली नोन एज एबी तो पढ़ी ले दिस वन इज द नॉर्थ ईस्ट इंडिया सो ए पोर्शन टा को टोटल आपण पार्ट बाय पार्ट करिके पढ़ी थिले ए टोटल टा को हमें कौन बोली कहूछ अरावली इज हियर नो ऑप्शन सातपुरा इज हियर हिमाद्री एंड पूर्वाचल बट नॉर्थ ईस्ट इट इज पूर्वाचल सिंपल Which of the following hill ranges is not a part of Purvanchal system? पूर्वांचल जब हमें पढ़ी थिले एटा पढ़ी थिलो पूर्वांचल रे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स रे दिस वन इज पटकाई नागा मिजो मणिपुर तो पटकाई थिला नागा थिला मिजो थिला पीर पंजल न थिला सो पीर पंजल टनल इज आल्सो देयर एटा भी क्वेश्चन में पढ़े पीर पंजल टनल कनेक्ट्स व्हाट ओके सो नॉट ए पार्ट ऑफ द पूर्वांचल सिस्टम Purvanchal system it includes these three parts so the right answer here is Pir Panjal
द हाईएस्ट पीक इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया एबे आपन को पचारिबा हाईएस्ट पीक इन वेस्टर्न घाट सीना तान के बोलोगे अन्ना माले हाईएस्ट पीक इन ईस्टर्न घाट जिंदागाड़ा 1690 2697 सेमिति ईस्टर्न घाट एबे जो मैं पढ़िथिले पूर्वांचल रे आपन को नागा हिल्स थिला नागा हिल्स रे सबटो हाईएस्ट सागर आंसर सारामती सारामती सिंपल देखो एबे निजे रियलाइज करो 6-7टा क्वेश्चन पर आपन केते स्पीड रे आंसर कले कहीं ना आपन को डायग्राम क्लियर हे गेला एटा कोन ए जिंसटा कोन एपटटा कोन एटा कोन एठी आपन तीनटा नुआ एठी आपन तीनटा देखिले एठी आपन चारटा देखिले ए कांसेप्ट जानले ए कांसेप्ट जानले ए कांसेप्ट जानले ये टोटल प्लेन्स जानिले सब जानि गलो सब चिट्ठा इज क्लियर सो व्हेन एवरीथिंग इज क्लियर एमसीक्यू बिकम्स 0 कांसेप्ट नथिले करूथिबो एमसीक्यू रु भी कांसेप्ट बहुत हेई पारे जोटा एबे आपण सिखुचंती सो देयर इज ए वे द मेघालय प्लेट्यू इज सेपरेटेड फ्रॉम छोटा नागपुर प्लेट्यू बाय व्हाट ए जस्ट एबे कहली आपण को कि दिस वन इज छोटा नागपुर प्लेट्यू this one is छोटा नागपुर प्लेट्यू and it also comes under peninsular plateau but मेघालय सिक्किम मणिपुर ए जो रहिले ए सब ओडा हमर को पार्टी पूर्वांचल रे रहिले तो पूर्वांचल और छोटा नागपुर प्लूट रे जो बैरियर अछि असम रो इट इज प्रेजेंट इन मालदा गैप हां बी राइट आंसर मालदा गैप लास्ट क्वेश्चन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हिल रेंजेस फॉर्म्स द इंडिया म्यांमार बॉर्डर जेते थर क्वेश्चन Aravalli is here, forget it. Vindhyanchal is here, forget it. Satpura is here, forget it. India Myanmar Pacharchi, Patkai Hills. Purvanchal one of the reason Patkai Hills. Simple. एते कि जिनस 40टा क्वेश्चन सरी गला आपनकर बहुत इजी वे रे आपण बुझिले आ जो माने एबे देखुचंती यू कैन आल्सो if possible you can take a screenshot to this आपण माने एटा स्क्रीनशॉट भी नहीं पारिबे हैला सो दिस इज अ कांसेप्ट स्क्रीनशॉट आ जो माने ईवीएस एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी मोठू पढ़िया को चाहउछन माय कोर्स इज अवेलेबल यू कैन टेक दैट कोर्स फॉर वर्ल्ड ज्योग्राफी माय कोर्स इज अवेलेबल एबे ओएसएससी सीजीएल मेंस पई टोटल 5टा क्लास रे सारी भी 2टा क्लास सरी जाईची आपण फास्ट फॉरवर्ड रिकॉर्डिंग देखि भी पारिबे एंड फॉर ईवीएस मेनी स्टूडेंट्स हैव जॉइंड इफ यू गाइस आर इंटरेस्टेड देन यू कैन आल्सो जॉइन एबे तो सरी ची क्लास रिकॉर्डिंग भी देखि कि आपण अपडेट है पारिबे थैंक यू सो मच गॉड ब्लेस यू एज पर माय कमिटमेंट नेक्स्ट सेशन विल बी ऑन फॉरेस्ट्स और मिनरल्स और सॉइल दैट वी विल कम ओके थैंक यू जय जगन्नाथ गॉड ब्लेस यू थैंक यू सो मच थैंक यू